Hello everyone there. Today, today onwards, I'm going to start a new series of my videos regarding your spellings and pronunciation. Means how to improve spellings and how to improve pronunciation. As you all know, सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक विदेशी भाषा है. It is a borrowed language, right? So there are many rules that we are not acquainted with. बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साइलेंट लेटर्स हैं जो हमें परेशान करते हैं. एक ही लेटर के बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो हमें परेशान करते हैं. सो इन दिस सीरीज टुडे लेट अस स्टार्ट विद हाउ टू प्रोनाउंस सी एज क एंड स. सी को हम क का प्रोनाउंस करेंगे या स का प्रोनाउंस करेंगे, राइट? सो हियर आर द रूल्स. सो हियर यू कैन सी दैट इट इज साउंड एस when you have either I, E or Y after letter C. मतलब अगर C लेटर के बाद ये वॉयल्स आते हैं तीन I, E and Y, then sound of letter C is as स. तब हम उसे स के जैसे यूज करते हैं, लाइक सिटी, साइबर एंड सीमेंट and many other words. Now you have to find out other words when to pronounce sa with I, E and Y just after letter C. Now coming to letter C with k sound. k sound के साथ हम कब pronounce करते हैं letter C को? When other than I, Y and E, any consonant after C, it is pronounced as k. Ka, you can see after C we have A other than I, E and Y. Here I have U. Here I have O or any other consonant letter also. कोई भी consonant letter भी हो तो भी हम इसे क ही यूज करते हैं साउंड जो है. तो का, कट, कूल. So there are other cases with letter C. It is also pronounced as sh. sh के जैसा भी हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. when you have two vowels, दो वॉयल साउंड A, E, I, O, U में कोई भी दो वॉयल एक साथ अगर अपीयर होते हैं, then C is pronounced as sh, sh. Ocean, spatial and many other words. If we have, and you can see that after C we have two vowels here, after C we have two vowels here too, right? One more case with C, it is also pronounced as ch if we have H after C. C लेटर के बाद अगर H आता है तो हम उसे च के साथ प्रोनाउंस करते हैं, like match or like which. We have more cases with letter C. As you know that in English language you might have learned this the term exceptional cases. ये टर्म आपने सुन रखा होगा या आप जानते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में टर्म बहुत कॉमन है, एक्सेप्शनल केसेस, and it goes with letter C also. So here you can see that I have written two words, soccer and muscle, where no rule is followed. कोई भी रूल नहीं लगता है, इसे हम डिफरेंटली पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे एक्सेप्शनल की कैटेगरी में डाल देते हैं, soccer and muscle. Fine. So these are all about letter with letter C. How to pronounce letter C as sa, ka, sh and cha. And in coming videos we'll be coming more with spelling and pronunciation. Till then, goodbye.